these all things are living, and these all organism, or either they are plant or animal, are showing some of the life processes. Either the animal is running, or the flower is shown in the slide, or there is the movement in the different creature, or anything that you will be able to see in these slides. So these all are known as life processes. So I would like to tell you one by one what are the life processes and how we can distinguish any living person with a non-living person on the basis of the life processes. So let us start our journey by one slide. So as we all are the living things, and all living things looks different from each other, but as you have seen in the last slide that although the living things are different, but they all have seven things in common. These seven things are called as the life processes. Something is only alive if it does all seven processes. So the first process I would like to tell you that the all living things have the capability to move from one place to another place, either plant or either animal. I would like to show in the slide. So as we people are well aware that animals move their whole bodies to get either food, or they usually want to go from one place to another, or their office, or their other work from one place to another. So their whole body show the movement, as well as plant turn toward the light, as you will be seen in case of the when you put the flower of a potted plant in at the place where is the window. So you have seen that the plant start to bend toward the light. आपने कभी ऐसे किसी प्लांट को रखा हो बच्चों, जो खिड़की के पास रखा हो, तो आपने देखा होगा कि जो प्लांट है वो जिस तरफ से लाइट आती है उस तरफ बेंड कर जाता है, उस तरफ की तरफ अपनी एक प्रकार से देखा होगा कि मूवमेंट तो करता है. सो नाउ इट इज clear that there are some movement which are easily visible, we people show various movements. So in the body movement, so our different body parts moves, as well as there are some movement which are not easily visible, like the molecular movement. So the molecular movement that is taking place inside the cell as well as in the tissue. But although the molecular movement are not visible, but molecular movement are very necessary for all the life processes. So let us see in the next slide. So these are the different creature, or in this slide you will be also able to see that the molecules are also showing the movement. So every living organism have the property of the movement. So let us let us discuss about the second life process, that is the all living things have the capability to reproduce. So in the world, every living organism have the capability to produce the offspring of the same kind. So this is known as reproduction. So reproduction is the property by which the continuity of the life takes place. Means the living organism produce the organism of the same kind by the help of reproduction, either through the asexual way or either through the sexual way. So as we all are well aware that we all living animals have the babies, and either the babies comes from the egg, or there are the animal which are the oviparous, or they lay the egg. आपने देखा होगा कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अंडे देती हैं, लेकिन अंडे में एक निश्चित समय के बाद, इंक्यूबेशन के बाद, आपने बच्चों देखा होगा कि उनसे छोटे छोटे बेबीज निकलते हैं. सो दूसरी तरफ वो एनिमल्स जो विविपेरस कैटेगरी में आते हैं,
they give birth to the young ones like the mammals. So animals have the babies, as well as you have also seen, my students, in case of the plant, that the plants usually grow from the seed. आपने देखा होगा छोटे टिनी बिल्कुल छोटे छोटे सीड, लेकिन जब हम उसको मिट्टी पानी और सनलाइट में रखते हैं तो कुछ समय बाद आप देखते होंगे उससे बड़े विशाल विशाल दरख्त बन जाते हैं. सो सीड हैव द कैपेबिलिटी टू ग्रो इन ए large or giant plant. So new plant grow from the seeds. Any living organism have the property of the reproduction. There is the third property, that is the all living things are sensitive. Means they show the change, they show the something different behavior towards the stimulus, or we can say towards the changing environment. अब आप समझिए, अगर किसी आप कमरे में बैठे हैं और वहां पर अभी देखिए जैसे गर्मियों का सीजन चल रहा, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे गर्मियां लगेंगी तो वो ठंडक करने के लिए या तो पंखे को चलाएगा या फिर दूसरे साधनों का इस्तेमाल करेगा, या फिर अगर आपको कोई पिन चुभो दी जाए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो वो अपने हाथ को वहां से हटा लेगा, या फिर कोई गर्म चीज उनको जब चुभो दी जाती है, कोई प्रिक की जाती है या कोई पिन से या गर्म चीज उनको टच की जाए तो वो अपने उस जगह से अपने हाथ को या अपने बॉडी पार्ट को हटा लेते हैं. सो वी कैन से दैट द ऑल लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू चेंज, एंड लिविंग थिंग नोटिस changes in their surrounding and react to them accordingly, like the plant grow toward the light. आपने देखा होगा जब आप सीड को डालते हैं अपने जमीन में मिट्टी में, तो आपने देखा होगा उससे जर्मिनेशन होने के बाद आपने सिमरन जी देखा होगा कि वो लाइट की तरफ जाता है. एज वेल एज आपने देखा होगा कि सीड का एक भाग जमीन के अंदर जाता है ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में, उसे हम रूट कहते हैं. सो ये जो चेंज हम लोग देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं, सीड को जब जर्मिनेट होता है तो लिम्यूल वाला भाग जो कि आगे चल के स्टेम और लीफ बनाता है, वो दैट ग्रो टुवर्ड्स द लाइट, एंड the roots that is formed by the radicle of the seed, so it goes toward the down or toward the response of the gravity. So usually we people react to the temperature, like the cold, like the hot, or like the temperature, or like the rainy season. So this is all collectively known as that is known as sensitiveness. All living things need the nutrition. Either plant or either animal require the nutrition to repair their body, for the proper growth, for doing the metabolism, to fulfill their energy requirement. So every living organism need nutrition. So plant get the nutrition by the help of a process that is known as photosynthesis, that takes place in presence of light. But in case of animals, animals get the nutrition from the either from the plant as a raw material or from the other things. So we can say that the food is used by the living organism to provide the energy, and the green plant make their own food using sunlight by the process of photosynthesis. Animals eat plant or other animals. So we people comes under the category of the heterotrophic mode of nutrition. So autotrophic mode of nutrition is shown by the green plant, whereas the heterotrophic mode of nutrition, where animals usually depend plant or other animals for their food, is known as heterotrophic nutrition. So I would like to tell you another property or another life process that is known as all living things excrete. Means inside the body there are so many biochemical reaction takes place. So due to the biochemical reactions, so many waste are generated, and these waste may create harm to our body. So there is a mechanism of the maintaining the internal environment constant, that is known as homeostasis, as well as there are so many organs which are involved in a process in which
our body get rid of the स्टीटी सब्सटेंस और हार्मफुल सब्सटेंस, हमारी बॉडी से जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें जो मेटाबॉलिज्म के बाद बनती हैं उनको हमारी बॉडी में निकालने की प्रोसेस होती है। और हम कह सकते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर प्लांट और एनिमल्स usually remove the waste from the body. So both the plant and animal need to get rid of waste as well as gas as well as water. So this is one of the important property. Every living organism, every living things show the process of respiration. So usually the respiration is done by the help of the some specialized organs that is found in the animals, but plants also show the respiration, and the respiration takes place round the clock without any interruption. So plant and animal use the oxygen in the air to turn food into the energy. So inside the body of the plant and animal, that the food is burnt inside the cell, and the energy which is released is stored in the form of ATP, that is the energy currency, and energy is used by our body. So it is the process of the respiration which is helpful in the combustion of the food, due to which the energy is released. So every living organism show the process of respiration. There is the last life process that is known as all living things tends to grow, or all living things show the growth. So सिमरन जी, हम और आप लोग बेस्ट एग्जाम्पल हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो हमारे आपके शरीर में ग्रोथ, हम और आइदर इन टर्म्स ऑफ दी आप और हम लोगों में बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, और शरीर की भी अपनी अलग अलग ग्रोथ होती है। तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनमें ये लाइफ प्रोसेस पाई जाती है। यूजुअली हम लोग कुछ साल पहले तक बेबी थे, इसके बाद आफ्टर सम ईयर we become adult, and so babies grow into the adults as well as the seedling grow into the plant. So this is the property of the living organism, and these are the life processes, and everyone should know about these life processes. So again I would like to repeat, first one is the movement, another is the reproduction, third one is the sensitiveness, fourth one is the nutrition, fifth one is the excretion, and respiration and growth. So these 7 processes are found in every living organism, and we can say that if any process is missing, then we cannot say that that is a living organism. So let us start one by one. So in your syllabus there is a process that is known as nutrition. So nutrition is the process of taking food by an organism and its utilization by the body to build the body. हमारी आपकी ग्रोथ के लिए हमारे शरीर में बहुत सारी रिपेयर और डैमेज, जब हमें और आपको चोट लगती है या हमें और आपके शरीर में बहुत सारी वियर एंड टियर की मैकेनिज्म चलती रहती है तोड़ फोड़ की, उसके लिए हमें और आपको भोजन की जरूरत होती है। पूरा जो लाइफ है इट डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, and most of the food are also carbon based molecule. So we people are living in the organic world. So organic world usually consists of the carbon based molecule, as well as there are some inorganic materials are also required. So the outside raw material used by the living organism are food, water and air. So as per the modes of the nutrition is concerned, कितने प्रकार का अलग अलग प्रकार का न्यूट्रिशन होता है? There are 2 main type of nutrition. So one type is known as autotrophic nutrition and another type is known as heterotropic nutrition. प्यारे बच्चों, जैसा कि ऑटोट्रॉपिक शब्द पर अगर आप फोकस करें, इसको देखें बड़े ध्यान से, ऑटोट्रॉपिक वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, ऑटो एंड ट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें organism prepare their own food from the simple inorganic substance
like carbon dioxide, like water, that is the H2O, in presence of sunlight and chlorophyll. So autotrophic nutrition is shown by all green plants and some bacteria also showing the autotrophic nutrition. धरती पे पाए जाने वाले हरे भरे जितने भी पौधे हैं और कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं और इन्हें हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। दूसरा प्रकार का न्यूट्रिशन जो आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में। So this is the nutrition in which organisms get their food directly or indirectly from the plant. Like the all animals comes under the category of heterotrophic nutrition. There are some organisms which grow on the dead and decaying substance. They did not have the green pigment that is known as chlorophyll. So such group of the organisms are known as fungi. So fungus, animals, and there are some bacteria which show the heterotrophic mode of nutrition. So heterotrophic mode of nutrition again may be the saprophytic type, parasitic type, and holozoic nutrition. So let us discuss about saprophytic nutrition, parasitic nutrition, and holozoic nutrition in one by one. So start from the saprophytic nutrition. As we have already discussed that there are some group of the organisms which get their food from dead and decaying organisms. सड़ी गली चीजों पर हम और आप लोगों ने सिमरन जी देखा होगा, सड़े हुए फलों पर या सड़े हुए अनाज पर या लकड़ी जब डेड एंड डिकेइंग हो जाती है तो उस पर आपने देखा होगा कई बार मशरूम लाइक ग्रोथ देखी होगी। तो ये जो एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं। हम और आप लोग जब देखा होगा सिमरन जी, जब हमारे आपके कभी बरसात में कपड़े भीग जाते हैं या शूज भीग जाते और हम लोग रख देते हैं और 2-3 दिन बाद अगर देखते तो उसको व्हाइट कलर की एक प्रकार की मोल्ड छा जाती है, या हमारी जब रोटी या ब्रेड भीगी हुई या मॉइस्चर हुई रखी छूट जाती है कई बार टिफिन में, अगर हम 1-2 दिन बाद देखते तो उस पर मोल्ड लग जाता, ब्रेड मोल्ड। सो ये एक प्रकार के फंगस ग्रुप में आते हैं। हम और आप लोग खमीर उपयोग करते हैं, ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया भी सैप्रोफिटिक कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये सड़ी गली चीजों से भोजन प्राप्त करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले एनिमल कहते हैं हम इनको। दूसरे प्रकार के एनिमल वो है जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, मतलब ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। सो वन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। सो फॉर एग्जाम्पल हम और आप लोगों ने सिमरन जी देखा होगा कभी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर पैरासाइट होते हैं, जैसे कुस्कुटा, एक जिसे हम लोग अमर बेल या आकाश बेल कहते हैं। कुस्कुटा एक टोटल स्टेम पैरासाइट प्लांट है, दूसरे प्लांट पर ऐसे लिपटा रहता है और अपने हॉस्टोरिया की मदद से वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। ऐसे ही देयर आर सम ऑर्किड्स आर नोन एज स्पेस पैरासाइट, दे आर नोन एज एपीफाइट। सो यूजुअली पैरासाइट फॉर द स्पेस। देयर आर सो मेनी टिक्स, लाइस, लीचेज। ये हम और आप इंसानों में कई बार देखा होगा, जब आप कभी ऐसी जगह नहाने चले जाते हैं बच्चों जहां पर लीचेज होती हैं तो आपके शरीर से चिपक जाती है, या कैटल्स जब पानी पीने जाते हैं तो उनके शरीर से चिपक जाती है, चौंक जिसे हम कहते हैं। जब आप अपनी अच्छी हाइजीन और हेल्थ का ध्यान नहीं रखते तो लाइस और टिक्स बॉडी पे ग्रो हो जाते हैं। हमारे आपके शरीर में सो मैनी इंडो पैरासाइट, मतलब जो ऐसे पैरासाइट जो शरीर के अंदर से भी हमारे भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे पैरासाइट जो शरीर के बाहर हैं, जैसे टिक्स, लाइस, मॉस्किटो, एक्टो पैरासाइट, वो हमारे आपके शरीर से बाहर से खून पीता है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। सो लीचेज ऐसे ही एक्टोपैरासाइट है, शरीर से बाहर से खून लेता है, सैंग्विगोरस से ब्लड फीड करता है। लेकिन देयर आर सम पैरासाइट which usually found inside our body, inside our gut. So these are known as endoparasite, like roundworm. So example is Ascaris. There is the tapeworm that is known as. जी सर, सर आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं ये 7 प्रोसेसेस ऑफ लाइफ से जुड़ी हुई। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास केवल 5 मिनट का समय इस सत्र में शेष है। यस मैम। सो बच्चों अगले 5 मिनट में आपको कुछ बातें और बताना चाहूंगा। जैसे टेप वॉर्म है, तो टेप वॉर्म में टीनिया सोनियम दैट इज नोन एज टेप वॉर्म, और प्लाज्मोडियम इट इज नोन एज मलेरियल पैरासाइट।
So these are the parasitic organisms, and these organisms show the parasitic type of nutrition. They depend on the another living organism for their food. There is the holozoic nutrition, Jantu Sambhoji nutrition. मतलब it is the nutrition in which organisms take food directly and then digest and absorb. So, like amoeba, like paramecium, like birds, like fishes, like humans, etc., comes under the category of this mode of nutrition. So, you will be able to see on the left of the slide, you will be able to see there are the mushroom-like structures. In the middle of the, you will be able to see the cuscuta, that is known as dodder or amarvel, or on the extreme right, you will be able to see there is the holozoic nutrition example, that is known as amoeba. So similarly, nutrition in plant. So plant nutrition, since plants are the autotrophic, they have the green pigment that is known as chlorophyll, and they show the unique process known as photosynthesis. अगर हम photosynthesis पे फोकस करें तो photosynthesis दो वर्ड से मिलकर बना है बच्चों, photo plus synthesis. Photo means light, synthesis means to form. So photosynthesis is the process by which plant prepare food by using carbon dioxide, water in presence of sunlight and chlorophyll. जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं. This is the equation of the photosynthesis. So next 1 minute, ma'am, I would like to tell my student about the equation. So there is the 6 molecule of CO2 and 12 molecule of H2O in presence of sunlight and chlorophyll. There is formation of glucose and water in O2. So photosynthesis, there is the first step that is known as absorption of the light energy by the chlorophyll molecule, that is the green in color. And inside the leaf or green part of the plant, that is in the chlorophyll, conversion of the light energy to the chemical energy. So energy is converted into the bond. So and splitting of the water molecule into the hydrogen and oxygen, that is the photolysis of the water. This process is known as photolysis of the water. Photo means light, and lysis means breakdown. So splitting of water molecule into the hydrogen and oxygen, and reduction of the carbon dioxide to the carbohydrate, or that is known as chlorophyll. So this is the schematic diagram. You will be able to understand, my students, that the energy